मीन्स लैम्डा नॉट n, ठीक है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, दूसरी चीज, फायजा, राबिया एंड शाहिद, शाहिद नहीं, शावेज ने दिया था ना टेस्ट, या शाहिद ने दिया था। एक टेस्ट हुआ था 5 मई को, आई गेस। जस्ट अ सेकंड, लेट मी सी, किसने दिया था? यस सर, शावेज आपने? में आई गेस सर। हाँ, शावेज आपने दिया था ना। तो राबिया एंड फायजा, काफी मतलब उसमें मिस्टेक्स थे। आई एक्चुअली लाइक आई, मतलब जब ध्यान नहीं था एक तो हमको चेक करने का, ठीक है ना। yesterday Learnivio team reminded me that I have to check the paper, so I checked it in the form की, मतलब I looked at the answers and then I marked it without taking anything, है ना, from the phone only. So in that only I saw that there was like too many mistakes, ठीक है। तो एक दिन किसी दिन ना, जिन लोगों को भी नर्स्ट इक्वेशन में दिक्कत है, इरम आपका ठीक हो नर्स्ट इक्वेशन, लॉग वाला पार्ट? यस इरम, Yeah. ठीक है। Yeah. ओके, फाइन फाइन, ठीक है। सो आई विल सेंड यू अ क्वेश्चन पेपर, आप उसको कीजिएगा, ठीक है, घर में ही असाइनमेंट के तौर पे। कब एग्जाम चल रहे हैं अभी आपके इरम? No, sir. सॉरी, No. नहीं ना, हो गया सब कुछ, ठीक है। सो आई विल सेंड यू, वो आप खुद से करके देखिएगा, है ना। एंड शाहिद, आपने, यू हैव नॉट डन नर्स्ट इक्वेशन विथ मी, आई गेस, राइट शाहिद? Yes, sir. Sorry, your voice is cracking, I can't hear you now. Yes, I haven't done that. You haven't done, ना? So लेक्चर्स आप देख रहे हैं अभी? No, not in. नॉट राइट नाउ, ओके। स्कूल में क्या चल रहा है आपके? Biomolecules. ओह, बायोमोलिक्यूल्स चल रहा है, ओके फाइन, ठीक है। तो ये ड्यू रह जाएगा शायद, लेकिन ठीक है ना, वंस यू गेट द टाइम, वंस द हॉलीडेज स्टार्ट ना, अभी तो स्कूल से प्रेशर नहीं है आपको, तो आप अभी नहीं करने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आई नो दैट। हमारे साथ ही चलिए, इतना ही काफी है आपके लिए अभी। बट वंस द हॉलीडेज स्टार्ट, आई थिंक दैट विल स्टार्ट फ्रॉम मिड ऑफ जून, राइट शायद, Yes, sir. है ना। सो आइदर वन थिंग विल हैपन, आइदर द योर एग्जाम विल स्टार्ट और दे विल डू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन योर स्कूल, है ना। तब आप लेक्चर देखना स्टार्ट कर दीजिएगा कम से कम। बट इफ दे Yeah. डोंट टीच यू बिफोर दी हॉलीडेज, देन इन हॉलीडेज यू विल कंप्लीट दिस, ठीक है शायद? Yeah, okay, sir. ओके, हॉलीडेज में आपके पास वक्त भी रहेगा सुबह, तो कुछ क्लासेस की जरूरत होगी तो उस टाइम हम क्लास भी ले सकते हैं सुबह, ठीक है शायद? Yeah, okay, चलिए, sir. ओके, लेट मी वेट फॉर 2 more minutes, है ना। फ्यू मोर स्टूडेंट्स हैव टू कम एंड देन वी विल स्टार्ट द क्लास। आज क्या करेंगे, और आर वी गोइंग टू डू टुडे? जी, क्या करना है आज? सर, जी बताइए शावेज। when will this chapter get over? टुडे टुडे टुडे, आज हो जाएगा इंशाल्लाह। बैटरीज, क्यों थक गए आप? No sir, like it's long chapter. हाँ, ये लंबा चैप्टर तो है, आई मीन नो डाउट लंबा चैप्टर है ना। इसमें मतलब क्वाइट अ न्यू थिंग्स आर हियर, है ना। फिर उसके बाद कैलकुलेशन वाला भी चैप्टर है, Yes, तो sir. आई हैव टू सॉल्व एवरीथिंग, राइट। क्लासेस में तो टाइम तो लग जाता है इसमें। इन ईच पार्ट वी हैव कैलकुलेशंस, राइट, ऑलमोस्ट ईच पार्ट। 3 पार्ट में अगर इसको डिवाइड करेंगे, सो हियर वी हैव, फर्स्ट वी हैव द नर्स्ट इक्वेशन पार्ट, राइट। देन वी हैव द Yes. नर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, देन वी हैव फैराडेज लॉ, ठीक है। देन वी हैव कंडक्टेंस वाला पार्ट, मोलर कंडक्ट, जो कॉलरस लॉ वगैरह है ना, कंडक्टेंस। तो ये तो 3 पोर्शन तो मेजर हैं आपके, किसके लिए? विद कैलकुलेशंस, है ना। इसमें भी लेकिन चैप्टर Yes. खत्म नहीं होता, राइट, चैप्टर इज नॉट ओवर हियर। देन वी हैव बैटरीज, देन वी हैव कोरोजन, ठीक है। एंड दिस चैप्टर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्री रिक्विजिट नॉलेज। नर्स्ट इक्वेशन के लिए, फैराडेज लॉ के लिए, रिएक्शंस लिखने के लिए, यू हैव टू हैव एन आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है।
11th में वो नहीं सही से किया रहता तो वो पढ़ाना पड़ता है. देन यू हैव टू डू रिडॉक्स में क्या आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर. इफ यू डोंट नो ऑक्सीडेशन नंबर देन दोनों में दिक्कत होगी, नस्ट इक्वेशन में भी फैराडेज लॉ में भी. राइट, नस्ट इक्वेशन में बिकॉज वी हैव टू सी द रिडॉक्स रिएक्शन, फैराडेज लॉ में बिकॉज वी हैव टू नो लाइक व्हेन वी आर how much electricity is used to convert some ion into some metal या फिर some gas. So ion से gas में कितना number of moles इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो कैसे निकलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट से. ठीक है. So a lot of prerequisite knowledge and lot of new knowledge also है ना. For example log generally 11th 10th के बाद तुरंत 11th में आते हैं, फर्स्ट और से बायो वालों को log उतना सही से नहीं आता. Then you have to revise log also, है ना. इस वजह से थोड़ा लंबा चैप्टर तो है, no doubt. So today we will do quickly batteries and corrosion और फिर खत्म कर देंगे. जनरली हम इस बैटरीज और करोजन को लेते नहीं थे क्लास में. आई यूज्ड टू से लाइक स्टूडेंट्स की आप नोट्स इसका बना लीजिएगा बुक से देख के, उतना ही काफी है आपके लिए. बट आई सी दैट क्वेश्चंस अब इसके बैटरीज और करोजन से सवाल आ जाते हैं और कुछ इस तरह के भी सवाल रहते हैं दैट इज नीडिंग अ बिट ऑफ लॉजिक, है ना. ऐसा नहीं कि सिर्फ रटा रटाया वाला सवाल आ रहा है, थोड़ा सा लॉजिक वाला सवाल भी आ जाता है. ठीक है. सो विल डू बैटरीज एंड करोजन टुडे. So I can just scroll up. स्क्रॉल अप इसके लिए कुछ नहीं लिखा, नोट लिखा है बस. चलिए टॉपिक डालिएगा प्राइमरी सेल्स. ठीक है, प्लीज रख. द डिवाइस which provides the electrical energy, which provides electrical energy is called cell. Is called cell. It can be primary or secondary. Assalamu alaikum Tarif, how are you? Fine, sir. Alhamdulillah. It can How are you, be. sir? Sorry, what happened? Sir, I'm fine. How are you, sir? You are in, where are you? What are you saying? Wait a second. Nothing. Let me get my earphone. What happened? Why are you late? Sir, my Arif? computer had an issue before I was joining, it crashed. अच्छा. पतिया आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम? Sir, no, sir. I was क्या हुआ? praying so that, I'm sorry, sir. I was praying, so that's my birthday. Please write here. Next लिखिए. The cell in which is right. The cell in which products can't be changed. Products can't be changed back into reactants. Changed back into reactants is called primary cell. It's called primary cell. For example लिखिए. Daniel cell, mercury cell, dry cell, etc. So all the electrochemical cell, that is all the galvanic cell that we have seen till now,
All of these are example of what? Primary cells, because if once zinc gets converted to Zn2 plus, then Zn2 plus से वापस से वो zinc नहीं बन सकता है, ठीक है? So the cell in which the products can be changed back into reactants, it is called primary cell. Now, right, dry cell. Right, dry cell. Let me get dry cell. Will you make this diagram? Sir, we should draw this. Yeah, draw this. Make the diagram quickly. Okay, so you can write here. Here we have zinc casing, right? So the container is zinc. Okay, container जो है आपका, that is zinc. ऊपर से covering होती है. Container is zinc casing, which is acting as a anode. Zinc is acting as an anode. तो reaction anode में क्या होगा? I hope you understand. ठीक है? When zinc is acting as what? It is acting as anode. Then cathode क्या है आपके पास? What is the cathode here? Carbon electrode. Carbon electrode is the cathode. Carbon electrode क्या है आपके पास? Cathode. But this carbon electrode, that is the cathode, that is going to be what? It is going to be in the form of graphite. यहाँ पे लिख लीजिए graphite. Okay. Then it is surrounded by this manganese dioxide. कहाँ गया? Yeah, this manganese dioxide. This is powdered. Okay. This is powdered manganese dioxide. All of you have seen dry cell, ना? Yes or no? Tell me. Battery जो टॉर्च वगैरह में लगता है, दोनों टॉर्च वगैरह आपने यूज किया है कि नहीं किया है. इफ यू ब्रेक दोस बैटरी, यू विल सी दैट सम पाउडर्ड थिंग, दोस आर मैग्नीज डाइऑक्साइड. ठीक है. हाँ, बेसिकली आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए? रिएक्शंस लिख लीजिए. नो, प्लीज राइट रिएक्शंस एट एनोड. एट एनोड क्या होगा? जिंक गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn2 plus 2 electron. Zinc getting converted to Zn2 positive plus 2 electron. Then right at cathode,
At cathode, you have manganese dioxide, which is touching the carbon electrode, which is touching what? The carbon electrode. Then you have the ammonium chloride electrolyte, that is also touching the carbon electrode. है ना? MnO2 और कौन टच कर रहा है? NH4 positive. So plus NH4 positive plus electron is going to give you MnO, and then you will have OH plus NH4 positive, it will become NH3. Okay, so here manganese is in the oxidation state of +4. If you see here, the manganese here, it is in the oxidation state +3. So किसका reduction हो रहा है? Reduction of manganese is happening here. Next लिखिए. NH3 formed in the reaction. Forms a complex with Zn2 plus to give ZnNH3 whole 4 2 positive. Okay. And once you want to balance this reaction with respect to the number of electrons, you will multiply at cathode by 2 and you will get the balanced chemical here. You can write one more point. The cell has a potential of approximately 1.5 volts, which decreases by time. है ना? इसी वजह से अचानक से if you have seen torch, then वो अचानक से बंद नहीं हो जाता. ठीक है? It will not get off randomly. वो धीरे धीरे क्या होगा? डिम होता जाएगा, राइट? धीरे धीरे डिम होता जाएगा एंड देन एक बार बंद हो जाएगा, यानी कि बैटरी खत्म. राइट नेक्स्ट मरकरी सेल. हाँ ठीक है. जी. Sir, you can read it, the NH3 formed in the. अच्छा, यहाँ तक लिख लिया आपने. ठीक है, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच. अब लिखिए मरकरी सेल. मरकरी सेल CRT निकाल के देते हैं. Chavez, let me know once you're done. Yes, sir. Please start writing. It consists of zinc mercury amalgam, which act as anode, देखिए cathode is paste of mercuric oxide HgO, mercuric oxide and carbon powder.
and carbon powder. इसमें लिखिए the electrolyte is a paste of potassium hydroxide and zinc oxide. Now the reactions at anode is right at anode. We have the zinc amalgam ZnHg. We have the zinc amalgam, that is ZnHg, plus 2 OH negative from potassium hydroxide. It is going to give you zinc oxide plus H2O and 2 electrons. At cathode, we have HgO plus H2O and the 2 electron. It is going to give you Hg plus 2 OH negative. So the complete cell reaction will what? Complete cell reaction हो जाएगा आपके पास zinc amalgam ZnHg plus this 2OH negative will be getting cancelled. H2O or H2O getting cancelled. 2 electron and 2 electron will be getting cancelled, and you will be getting ZnHg plus HgO, mercuric oxide, giving you zinc oxide plus Hg. Next point लिख लीजिए. Cell potential approximately equal to 1.35 volts and remains constant. Remains constant during its life. ठीक है. सो दो हमने पढ़ लिया किसमें? दो हमने पढ़ लिया प्राइमरी सेल. ठीक है. नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट सेकेंडरी सेल. सेकेंडरी सेल में है लेड स्टोरेज. ठीक है. देन वी हैव निकल कैडमियम. दो सेल वहां पे पढ़ना है. देन वी हैव टू लर्न अबाउट फ्यूल सेल. फ्यूल सेल में वी हैव टू लर्न अबाउट H2 and O2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. ओके. फिर उसके बाद यूजेस. देन वी विल डन विद दी बैटरीज. खत्म हो जाएगा. फिर उसके करेंगे करोजन. आई होप एवरीवन इज डन. Please write next. Secondary cells. Sir, here battery will be over when a product is formed. Sorry. Battery will be over when a product will be formed, like from reactant to product. When everything is product formed. नहीं. यहाँ पे क्या होगा ना, लाइक हाँ भाई सही है. जब सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा ना. That's what you are saying, right? Yes. हाँ, correct. Because the thing here that you can see is, in this case, generally the things that we are using, it is either solid or it is in the form of paste. ठीक है. Aqueous और या फिर उस तरह का कुछ नहीं है. But in the previous case, उसमें you have the paste where you have water also. So concentration of ion can decrease या increase. Concentration of ions in aqueous medium can increase या decrease. But paste में सॉलिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता. लिक्विड का कंसंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करता है. ठीक है. सो वंस एवरीथिंग इज कन्वर्टेड टू प्रोड्यूस, फिर खत्म बैटरी. राइट नेक्स्ट सेकेंडरी सेल्स. प्लीज राइट द डेफिनेशन. A secondary cell is capable of secondary cell is capable of being charged
being charged after discharge again and again. For example, lead storage battery and nickel cadmium battery. टॉपिक डालिए, lead storage battery. Lead storage battery. Just a second. Let me get a better pic. NCERT का फोटो तो है वो जो कोई काम का नहीं है ना, इसको ले लीजिए. तो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे? Here what do we have? Here we have lead and a mixture of lead and lead oxide. ठीक है? And a mixture of lead and lead oxide. तो यहाँ पे अगर आप गौर से थोड़ा सा देखेंगे, if you see here, then what do we have in the anode? Tell me. एनोड में क्या है हमारे पास से? See, एनोड से कौन कनेक्टेड है? Pb, right? So एनोड में क्या है? Pb है. And in cathode what do we have? Pb plus PbO2. ठीक है? Pb plus PbO2. So please write. It consists of lead anode and a grid of lead packed with lead dioxide as cathode. और क्या है यहाँ पे? And there is a 38% H2SO4 as electrolyte. ठीक है? अच्छा, here you will see there are two different reactions. एक तो चार्जिंग का, एक तो डिस्चार्जिंग वाला पहले देखेंगे ना, कि what reaction happens when we are using the battery, and then फिर चार्जिंग में क्या reaction. ठीक है? So please write. When battery is in use, that is, it is charging or discharging, guys, tell me. बैटरी जब यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा? Discharge. डिस्चार्ज होगा, राइट? डिस्चार्ज. Discharging. The reactions are पहले के at anode. Please लिखें. Pb plus SO4 2 negative is going to give you PbSO4 plus 2 electron. Next लिखिए at cathode.
we have PbO2 plus SO4 2 negative plus H plus and 2 electron is going to give you PbSO4. PbO2 plus SO4 2 negative plus H positive plus 2 electron, it is going to give you PbSO4 plus 2H2O आ जाएगा. H plus कर दीजिए. ठीक है. Now the overall reaction will be, overall reaction यहाँ पे क्या हो जाएगा? Please write. Pb SO4 2 negative, SO4 2 negative दोनों तरफ है यहाँ पे, right? Then we have 2H positive, PbSO4 and PbSO4 दोनों तरफ है यहाँ पे. पहले तो Pb आएगा, then you will have PbO2 plus you are going to have H plus करने के लिए 2 electron plus 4 electron. You will have H2SO4, H plus और SO4 2 negative से H2SO4 आ जाएगा. ठीक है, 2 electron will be getting cancelled, and then here you will be having 2 PbSO4 plus 2H2. And अच्छा ये यहाँ पे 4 होगा. Just a second. This will be 4H plus ना, 2 2 4, 4H plus, and this will be 2H2SO4. This is the overall reaction. ठीक है. सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखिए, ड्यूरिंग चार्जिंग the reactions are reversed. Reaction क्या हो जाएंगे? Reverse हो जाएंगे. तो overall reaction during charging will be what? It will be 2 PbSO4 plus 2H2O gives Pb plus PbO2 plus 2H2SO4. ठीक है. Now, what is happening to the concentration of H2SO4 during discharging? Is it will be increasing or decreasing? When the cell is being used, it is being discharged. तो H2SO4 की concentration क्या हो रही है? Increase कर रही है या decrease कर रही है? Decrease. It is decreasing, right? So when the concentration of H2SO4 is decreasing, and H2SO4 is what? It is the electrolyte. Electrolyte क्या करेगा? Electrolyte is the one which is going to be moving the charges and carrying electricity in a electrolytic solution. H2SO4, that is an electrolyte which is carrying electricity. It is reducing in the discharging. ठीक है, तो क्या हो रहा है? इससे हम लोग को एक सेंस बन रहा है कि it is going to discharge. And H2SO4 is what? It is being generated, it is being formed in the charging of the battery. That is why जब बैटरी चार्ज हो जाएगा तो फिर से उसके पास कैपेसिटी हो जाएगी किस चीज की? Its capacity will be there to again move the current and move the electricity. ठीक है. ठीक है, यहाँ पे ऐसे पॉइंट लीजिए. As H2SO4 is regenerated, cell potential increases,
and cell is recharged. नेक्स्ट लिखिए निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल. Just a second. इसमें हमको सीधा ये लिखिए, निकल कैडमियम सेल. It consists of, ऐसे लिख दीजिए, it consists of cadmium anode, consists of cadmium anode and a metal grade containing NiO2, which act as cathode, Next, the electrolyte used in this cell is KOH. Now reactions लिख लिए at anode. At anode you will have cadmium plus OH negative. ठीक है, ये होगा reaction discharge के लिए, and the reverse reaction will be there for charging. It's going to give you cadmium oxide plus H2O plus 2 electron. ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा. कैथोड में you will have nickel hydroxide plus 2 electron charging and discharging. Wait a second. OH whole 3 है ना. अच्छा, यहाँ पे NiOH whole twice हो जाएगा. ठीक है, so here +3 और यहाँ पे reduction होगी, क्या हो गया है, it is +2, plus it is going to give you 2 OH negative. This is for discharging, this is for charging, this is for discharging, this is for charging. Overall reaction क्या हो जाएगा यहाँ पे, overall reaction will be cadmium, यहाँ पे if you balance it, it is going to be 2 OH negative, तो OH negative cancel हो जाएगा, you will get cadmium plus NiOH whole thrice. Discharging, and this will be for charging, cadmium oxide plus NiOH whole twice plus H2O. ठीक है, this is for discharging, this is for charging, and ये आपका overall reaction. ठीक है, now your homework will be, ऐसे तो याद करना बहुत मुश्किल है इन सबको, है ना. So what you have to do, you have to repeat these things. ठीक है, you have to repeat these things. Repeat कैसे करना है, ऐसा नहीं कि जिस तरह से हमने लिखा है बस उसी तरह से लिखो. Wait a second, you Travis, tell me. Here at anode C, cadmium plus 2 OH minus, where did it go? Where did 2 OH minus go here?
reaction. ये Yeah, yes. अरे it became water In and cell reaction. cadmium. In cell reactions. अच्छा अच्छा कैंसिल हो जाएगा ना. Where did the electron go? It got cancelled ना. Oh, okay, okay, yes. है ना, कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए होमवर्क में. सी व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंडेंस ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, कंडेंस करके लिखना है. इफ यू आर गोइंग टू रिपीट इट तो क्या करना है, कंडेंस करके लिखना है. होमवर्क में क्या लिखेंगे, प्लीज राइट. You will make a table in which you are going to make the cell. You And will just write the scroll up. cell name. Yeah, sure, sure. You will write the cell name. Then you will write cathode and the anode in this way. Then you will write the electrolyte. Then you will write the electrolyte, and then you will write the cell reaction. And then you will write the cell reaction. ठीक है. For example, in this case, ठीक है. In which case? In this case, sorry, my bad. The cell is what? The cell name is nickel cadmium cell. I have nickel cadmium. अच्छा, इसको nickel cadmium storage cell भी बोलते हैं. ठीक है, nickel cadmium cell. What is the cathode? Cathode is going to be, tell me. Cathode is NiO2. What is the anode? Anode is cadmium. What is electrolyte? Electrolyte क्या लिखा है? KOH, right? Electrolyte used in this cell is KOH. यहाँ पे लिख लीजिएगा KOH. ठीक है. And the cell reaction you write anode, cathode, overall. ठीक है. So this will be your homework. You will write for all the cells that we have done. How many cells we have done? We have done 4 cells. Dry cell, then we have done mercury cell, then we did lead storage cell, and then we did nickel cadmium storage cell. Can all of you do this? Yes or no? Please tell me. Homework कर लेंगे? Yes, sir. Yes. Yes, है ना? ठीक है. नहीं तो फिर याद नहीं होगा आप लोग को. ठीक है ना, ऐसे याद करने मत बैठिएगा. You have to redo everything in a different way. अभी आप लोगों ने फुल नोट्स लिखा, ये क्या हो गया आपका, शॉर्ट नोट्स हो गया. ठीक है. देन आफ्टर दिस व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक अ माइंड मैप आउट ऑफ दिस. ठीक है, यू कैन मेक अ माइंड मैप. इस तरह से आप लिख लीजिएगा सेल. सेल के बाद ऐसे कीजिएगा प्राइमरी सेकेंडरी. ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी में फिर ऑल ऑप्शन कीजिएगा. ठीक है, उसके बाद फिर हर एक में से इस तरह से निकलेगा आपका. जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका ये हो गया सेकेंडरी सेल, है ना. सेकेंडरी सेल में से एक ऑप्शन क्या आएगा, निकल कैडमियम. निकल कैडमियम में एक आप बताइएगा कैथोड क्या है, एनोड क्या है. देन यू विल राइट द इलेक्ट्रोलाइट, देन यू विल राइट द सेल रिएक्शन. ओके. So rearranging informations in different way is going to strengthen the pathways in your brain. तो recognize करना चीजों को, वापस लाना, रिटेन करना आसान हो जाएगा. ठीक है, एक चीज को बार बार मत कीजिएगा. नोट्स बनाए, फिर नोट्स बनाए, नोट्स बन नोट्स. From notes you will make short notes. From short notes you will make mind map. ओके, इतने में आके फिर खत्म हो जाएगा. 3 बार दोहरा लिया काफी है. ठीक है, 3 बार दोहरा लिया आपने, काफी. चलिए राइट. नेक्स्ट फ्यूल सेल. FUELSELL, sorry, CELL. Please write. These are galvanic cell. These are galvanic cells in which the energy of combustion of fuels कर लीजिए, like H2, CH4, CH3OH, etc. is directly converted to electrical energy. Is directly converted to electrical energy. Here we have to learn only
one fuel cell, that is hydrogen oxygen fuel cell, particularly hydrogen oxygen fuel cell. Right here. In this cell, in this cell, H2 and O2 are bubbled through porous, या फिर कार्बन विद पोरस, पोरस लिख लीजिए, porous carbon electrode electrodes into concentrated KOH solution, The reaction at anode में you will always have what? You will always have oxidation. So you'll have 2H2 plus 4OH negative. OH negative कहाँ से आ रहा है? From KOH. 4OH negative will give you 4H2, 4H2O plus 4 electrons. In cathode, you'll have O2 plus 2H2O plus 4 electron will give you 4OH negative. This will be aqueous. What will be the overall reaction? See, the 4 electron will get cancelled. 4OH negative will get cancelled. Okay? 4OH negative is getting cancelled. And what is remaining here? From here, 2H2O will cancel the 4H2 and it will become 2H2O. Okay? So the overall reaction is 2H2 plus O2 gives you 2H2O. Okay, then make this diagram. Simple diagram. Okay. See, these anode and cathode, na, both of these are made up of porous carbon. Okay, this will be having pores. क्या होगा इनमें? Black से करते हैं. Wait a second. Malfunction. Yeah, all of these are having what? Pores. ठीक है. Now carbon pores है यहाँ पे, H2 यहाँ से आया, ठीक है, and then the reaction happens here. O2 is coming from here and the reaction will happen here. H2 is passing out. तो आप इसको बस फीड करते रहिए. You don't have to change the electrode. That is why इसका लाइफ काफी ज्यादा होता है. ठीक है, इसका लाइफ काफी ज्यादा होता है और स्पेसक्राफ्ट में भी इसको यूज किया जाता है. So there is a continuous source of energy. You just need to do what? You need to feed this particular cell. आप H2 और O2 डालते जाइए, आपको क्या मिलता जाएगा? You will get electricity. ठीक है, you are going to get electricity. H2O2 कहां से बना सकते हैं आप? H2O2 वापस से आप H2O से ही बना सकते हैं, राइट?
यू आर गेटिंग H2O को क्या कीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस कर लीजिए, यू विल गेट H2 + O2 एंड फ्रॉम देयर वंस यू कैन प्लग इन अगेन एंड फिर से क्या मिल जाएगा आपको, फिर से H2 मिल जाएगा। ठीक है, सो देयर आर अ फ्यू फीचर्स, क्या बोलेंगे इसको, खासियत को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक से अच्छा क्या हो जाएगा, advantages. Yeah, there are a few advantages of this fuel cell. Please write advantages. Sir, सबसे here पहला the advantage, electrons of oxygen is gone for electrical energy. electrons of oxygen. Yes. मतलब gone तो नहीं बोलते हैं उसको, ठीक है, सो Okay, okay. वो सिर्फ ट्रैवल करता है ना एनोड से लेके कैथोड की तरफ, राइट, Yes, yes. ठीक है, गॉन क्या मान लेगा, ठीक है। एडवांटेजेस में लिखेंगे यहाँ पे, हाई एफिशिएंसी, ठीक है, सो देर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ 100% एफिशिएंसी, बट मटेरियल्स की वजह से, टेम्परेचर सही नहीं होने की वजह से अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% ऑफ एफिशिएंसी होता है। सेकंड लिखिए, कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका क्या मतलब हुआ, नो नीड टू चेंज इलेक्ट्रोड्स, और वापस आपको मिल क्या रहा है यहाँ पे, वाटर मिल रहा है, राइट, एंड वाटर इज नॉट अ पॉल्यूटेंट, दैट इज व्हाई द थर्ड एडवांटेज इज गोइंग टू बी pollution free. Okay, where do we generally get electricity from, tell me, जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है कहाँ से आती है, व्हाट इज द सोर्स, एनी आइडिया, Battery. कहाँ से आती है, सॉरी शावेस, अरे सऊदी में तेल जला देते हैं क्या, हाँ, नो आइडिया, फायजा, मदीहा, तारीफ, राबिया, शाहिद, शावेस, अच्छा, वहां का हमको नहीं पता इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचता है, ठीक है, आई थिंक मे बी कोल भी तो होता होगा ना, फिर पेट्रोलियम होता है तो खैर, बट इन इंडिया वी हैव थर्मल प्लांट्स, ओके, वी हैव थर्मल प्लांट्स में दे बर्न कोल, थर्मल प्लांट्स में क्या होता है, दे बर्न कोल, और कोल को बर्न करने से जो भी हीट निकलता है, हीट एनर्जी इज देन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, and the efficiency of these thermal plants is only approximately 40%, ठीक है, only 40%, और उस हिसाब से फ्यूल सेल का कितना 60-70%, so there is a fuel cell is a good field of study right now, जिसके ऊपर एडवांसमेंट और किया जा सकता है कि किस तरह से इसको स्केल किया जाए, राइट, और बिग प्रोजेक्ट्स है ना, और उसको ट्रैवल मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास कैसे की जाए, एक जगह थर्मल प्लांट, एक जगह फ्यूल सेल का प्लांट लगाया जाए और उसको फिर बाकी आसपास के शहरों में कैसे लाया जाए, ठीक है, moving on, Efficiency is 40%. of thermal plants, और फ्यूल सेल का 60 to 70% है ना, दैट इज व्हाई फ्यूल सेल कैन बी बेटर सब्स्टिट्यूट फॉर थर्मल प्लांट्स, ठीक है, इतना हो गया आपका, अब क्या बचा, अब बचा है आपके पास, टेल मी व्हाट, कोरोजन, क्या बचा है, कोरोजन, is right, it is an electrochemical phenomena प्लूरल होता है, फेनोमेना पता नहीं हमें, और व्हाट, फेनोमेना लिख लीजिए, आई थिंक फेनोमेना इज
Okay. It is a electrochemical phenomenon. Is right. In this, metal oxide or other salt of metal forms a coating on metal surface. On metal surface. For example, एक तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, बहुत ही फेमस एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन. एंड देयर इज वन थिंग दैट इज नोन एज टार्निशिंग ऑफ सिल्वर. टार्निशिंग ऑफ सिल्वर. ठीक है. सो वॉट एवर मेटल यू हैव, इट इज गोइंग टू गेट व्हाट, कोरोड. और उसमें क्या होगा, उसकी वैल्यू फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी. आयरन की मजबूती कम हो जाती है और सिल्वर की वैल्यू कम हो जाती है. राइट, नेक्स्ट. Here you have to learn only the rusting of what? Iron. Rusting of iron पढ़ना है. And then what we have to do, we have to see the prevention. किस तरह से इसको prevent किया जा सकता है. चलिए please write. Rusting of iron. Since it is an electrochemical process, then what is going to happen? A redox reaction. Anode पे oxidation and cathode पे क्या होगा? Reduction होगा. So please write. Oxidation of anode. Sorry, oxidation of anode नहीं, oxidation of iron. ये क्या हो गया आपका? Acts as anode. Next लिखिए, reduction of O2 into H2O acts as cathode. So what reaction is happening at anode? In anode you are having Fe getting converted to Fe2 plus some, how many electrons? 2 electrons. Then at cathode you will have O2 plus H plus electrons giving you H2O. कैसे बैलेंस करें? 2 लगा दें, 4H plus 4 electron, multiply 2 here, 2Fe and 2 2s are 4 electron. ठीक है, so this is going to be balanced now. अब इसको कर लीजिए आप overall. So in overall, what is going to get cancelled? You have only the 4 electrons, and 4 electrons are going to get cancelled. And what are we going to get now? We are going to get 2Fe plus O2 plus 4H plus, and then 2Fe2 plus 2H2O. Okay, right, next. Right, next. This is Fe2 plus, na? This is what? This is Fe2 plus. So क्या होगा? This is ferrous ions. So please write ferrous ions. DFERROUS. Ferrous ions. Fe2 plus is further oxidized. Okay, is further oxidized by atmospheric oxygen. By atmospheric oxygen to Fe2O3.
कॉमा देके लिखिएगा, in presence of moisture, in presence of moisture, it gets hydrated, it gets hydrated and forms Fe2O3.XH2O. ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? दिस इज दी रस्ट. एट द एंड दिस इज दी रस्ट. अस्सलामु अलैकुम सिद्दीका, हाउ आर यू? Walaikum assalam. Alhamdulillah, I'm good, sir. How are you? You are not good, you are late. You are very late. What happened? Sir, I had to turn my computer on. Sorry. Sorry, what happened? You had to? Turn my computer on. It was off. I mean, so how much time does your computer take to turn on? Sir, it didn't have any battery, so I had to put it on charge and wait. Okay. And tell me, who gave you this link? Sir, I got it from the group, the Learnivio. Learnivio. Yes. What class did they say? They said it was Can you- physics class, but it's Acha. chemistry. तो उनको बोलिए ना गलत लिंक दिया आपने. Okay, sir. Okay? Thank you. ठीक है, right, next. Method of, or at the right, prevention of corrosion. Prevention of corrosion. आप लोग कुछ बताइए. Tell me. How can we prevent corrosion? एक तो चीज है ना जो like everyone uses one ना. Tell me. गेट वगैरह जब लगता है, so how do you prevent any metallic surface from rusting या फिर from corrosion? Yes. क्या? हाँ, वेरी गुड. व्हाट डू वी डू? वी पेंट इट. ठीक है, तो इस तरह के प्रिवेंशन को बोलते हैं बैरियर प्रोटेक्शन. क्या बोलते हैं इसको? बैरियर प्रोटेक्शन. नंबर 1 प्लीज राइट. बैरियर प्रोटेक्शन. बैरियर प्रोटेक्शन. अच्छा, देयर इज वन क्वेश्चन. एक चीज एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है. If you see the overall reaction, no? So in the overall reaction, you can see if you increase the concentration of H plus, then what is going to happen? It is going to increase the rate of conversion. Sorry, rate of corrosion. Speed corrosion का होगा, that is going to increase if you increase the H plus ions. तो ये सवाल बन सकता है, एसिड के प्रेजेंस में क्या हो सकता है? The corrosion is going to increase. ठीक है, so remember this 4H plus ion is in the reactant. एक हो गया बैरियर प्रोटेक्शन. बैरियर प्रोटेक्शन में क्या होता है? बैरियर प्लीज राइट. surface is coated with paint or some other chemical. Paint or some chemical. एग्जाम्पल में लिख लीजिए बिस्फेनॉल. और क्या कर सकते हैं बताइए? There are a few things which we cannot paint, है ना? There are a few things which we cannot paint. तो उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें ग्रीसिंग या उसकी ऑयलिंग कर देते हैं, राइट? ये सुनो, जो चिटकनी या फिर जो गेट में ऐसे ग्रिल वगैरह का दरवाजा होता है ना, तो जो बंद करने का वाला, जो बंद करते हैं जिसको, उसमें जो रॉड रहता है, यू कैन नॉट, आई मीन आप पेंट भी कर दीजिए तो इतना यूज होता जाएगा कि पेन उखड़ जाएगा, राइट? सो उस केस में फिर क्या करते हैं? वी ग्रीस इट और वी ऑयल इट. प्लीज राइट. द सरफेस इज प्रोटेक्टेड बाय अप्लाइंग थिन फिल्म ऑफ ऑयल और ग्रीस. ऐसे कर लीजिए. कोटेड विथ thin film of oil or grease.
हुआ नहीं है आप लोग के साथ कभी? इंडिया आए हो, इंडिया में तो कम से कम ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, लाइक यू हैव गेट ना, और Yes, कभी कभी sir. वो काला वाला गेट ग्रीस जो है वो हाथ में भी लग जाता है इफ यू आर नॉट वेरी प्रोटेक्टिव, राइट? ऐसा नो? Yes, sir. बाकी लोगों के साथ नहीं हुआ है? राबिया, शाहिद, तारीफ, मदीहा, फायजा, इरम? नहीं? अच्छा, बाकी लोग के साथ सैड नहीं, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं बताइए? व्हाट कैन वी डू नेक्स्ट? टेल मी, व्हाट कैन वी डू नेक्स्ट? उसके ऊपर कुछ ऐसा मेटल को रख दें, ठीक है। व्हाट कैन वी डू? उसके ऊपर कुछ ऐसा मेटल रख दें दैट इज नॉन नॉन करोडिंग, तो क्या हो, करोड नहीं करे, इट इज नॉट गोइंग टू करोडेड। सो राइट नेक्स्ट, electroplating, electroplating with non-corroding, with non-corroding metals. For example, लीजिए tin, nickel, zinc, chromium, aluminium. ठीक है, this is barrier protection. So electroplating is a big industry, ठीक है। Electroplating is a big industry. जैसे you have cars like BMW, ठीक है, then you have Aston Martin, Mercedes, ठीक है। So all of this big company, इन सब के ऊपर जो भी मेटल यूज होता है ना, whatever metal is being used in these companies, these are all being electroplated by one company. एक कंपनी सिर्फ क्या करती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करती है, नाम है उसका एटोटेक। When I completed my MSc, so यहाँ हुआ था मेरा एटोटेक में, एंड मेन काम वहाँ पे क्या था इसका, the main work was to electroplating, and I have a classmate who is still working there. Atotech is a company जो सिर्फ क्या काम करती है, जर्मन कंपनी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम करती है, ठीक है। ऑल द बिग जितने भी जर्मन कार्स है, जनरली जो जर्मन कार्स है ना, उनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग एटोटेक करती है। BMW वगैरह आई थिंक जर्मनी, नहीं याद नहीं है। To prevent corrosion. हाँ, टू प्रिवेंट corrosion ऑब्वियसली, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो सिर्फ एक कंपनी, सोच रहे लाइक वन टॉपिक जो कि हम लोग कितने मिनट में खत्म कर रहे हैं, इन लेस देन, आई मीन इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो हमने लिखा है, बैरियर प्रोटेक्शन के अंदर एक पॉइंट है, बैरियर प्रोटेक्शन के अंदर क्या है ये, इट इज अ सिंगल पॉइंट दैट इज ओवर इन टू लाइंस एंड देयर इज अ होल कंपनी ऑन इट, ठीक है। और एक कंपनी, इसके मतलब ये क्या है, पूरी एक इंडस्ट्री है, ठीक है। सो मेन वर्क उनका इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, बाकी और भी चीजें हैं, लेकिन मेन काम क्या है उनका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का है, राइट। नेक्स्ट, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, बी पार्ट होगा आपका, सेकेंड पार्ट। sacrificial protection, ठीक है। So what is happening in sacrificial protection? Sacrificial protection में किसी, जैसे मान लीजिए if you are going to prevent iron, ठीक है, what you are going to do, so this is iron, Fe, ठीक है, and above it we are going to put a more reactive metal. What we are going to put, tell me? Any metal which is more reactive than Fe. Non corroding नहीं कहा हमने, क्या कहा, any metal that is more reactive than Fe, that is more reactive than Fe. उससे क्या होता है बताइए, what happens here? It will get corroded. Sorry, That metal will get corroded. it will, iron will not get corroded, ठीक है। एक तो ये चीज तो पक्की बात है। What, Chavez?
which is more reactive will get corroded. Which is more reactive, that is going to get corroded. And that is why this is known as sacrificial protection. मान लीजिए अब क्या हुआ, please see. Let us suppose that ऊपर में you have got some metal, right? Above you have got some metal. ऐसा जरूर हो सकता है ना, that after some time, some of the metal from here, it gets corroded या फिर eroded, कुछ भी हो सकता है. यहाँ से इतना खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ से इतना खत्म हो गया. Now what happened? There is a droplet of water here. Water में you have H plus and OH negative both, and H plus is going to increase the rate of corrosion. ठीक है. Even when, अब देखिए अगर अगल बगल भी आपके पास क्या है, अगर if you have a droplet of water here and near to you, near to the water atom, near to the water molecules, you have a metal that is more reactive than Fe, then क्या होगा? Fe is not going to lose electron. These metal atoms are going to lose electron and get corroded. ठीक है. So please write here. यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए. The active metal क्या हो गया? That is more active or more electropositive than what? More electropositive than Fe. Please write. The active metal loses electron before Fe, loses electron before Fe and goes into ionic state. ठीक है. तो जब तक this metal is going to be there ना, थोड़ा सा रहा, फिर क्या हो गया? Ionic state में चला गया. Then again water will come. Then again it is going to get into ionic state. So धीरे धीरे करके active metal it is going to get corroded, है ना? It is going to get converted into ionic form. जब तक आपके पास एक्टिव मेटल है तब तक आयरन रस्ट नहीं करेगा. तब तक आयरन क्या होगा? रस्ट नहीं करेगा. नहीं तो फिर से क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू वंस अगेन डू व्हाट? यू हैव टू वंस अगेन गैल्वेनाइज. गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं वैसे इस प्रोसेस को. इफ इट इज डन विद जिंक के साथ करने से इसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं. ठीक है. प्लीज राइट नेक्स्ट. जनरली जिंक इज यूज्ड as sacrificial metal, and the process of covering iron and the process of covering iron with zinc is called galvanization. It's called galvanization. Okay. Write some remarks. Number 1. First point, write regarding zinc. Please write. Zinc is consumed. Zinc is consumed with time. Zinc is consumed with time, but as long as it is present, on the surface of iron,
surface of iron, iron does not rust. Okay. And there's always a comparison with tin. There is always a comparison with tin. जैसे कि ऊपर में आप देखिएगा, see here, barrier protection में हमने tin डाला है, right? So what will happen if tin में कुछ scratch वगैरह लग गया, ठीक है? So tin में क्या हुआ? If you scratch the tin और what tin plating थोड़ा सा उखड़ गया अगर, तो coating क्या होगा surface का? It will no longer be present. And at that time, what is going to happen? At that time, Fe is going to get oxidized. ठीक है? Fe is going to get oxidized, and Sn वहाँ पे oxidized नहीं होगा. So please write here. Next point. When scratches occur at tin, when scratches occurs at tin, both tin and iron are exposed to surface. Are exposed to surface. Since iron is more reactive, right, than tin. What is the formula of tin? Sn. ठीक है? Sn. So Sn is in wedding element, right? Sn will be in wedding element. लेकिन कहाँ पे होगा? बारात में होगा. लेके बारात काना मजे से आया. Then you have मंजन कर फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, है ना? मंजन कर फेंक दे. Fe comes before, right? So Fe is going to be more reactive. ठीक है? Since iron is more reactive than tin, it will get oxidized. And rust. ठीक है? So this is the end of your electrochemistry. ठीक है? This is the end of electrochemistry. So what are the main portion revise करने के लिए? What are the main portions here? एक तो portion पूरा है. Scroll up. Okay, scroll up. Yes, sir. There is one portion that is completely related to conductors. है ना? Conductors में you have metallic conductors and electrolytic conductors. So electrolytic conductors के बारे में पूरा एक section where you have some relationship between resistance, resistivity, conductance, and conductivity. Then you move into molar conductance. From molar conductance, you go into the factors affecting the molar conductance. ठीक है? Once you got the factors affecting the molar conductance, strong electrolyte, weak electrolyte, further you have Corrosion. Okay? Then you have both the graphs, factors affecting with dilution, what happens. एक section हो गया पूरा, that is electrochemical cells. Electrochemical cell में chemical energy into electrical energy. There basically you have the Nernst equation. Then you have also an equation that is for delta G. Delta G is equal to minus NF E naught cell. Okay? So you have delta G also and the Nernst equation also. Then you have another, that is Faraday's law of electrolysis, or rather if I say electrolysis में दो cases, qualitative analysis and quantitative analysis. In qualitative analysis, you are going to do products of electrolysis. In quantitative analysis, you are going to do Faraday's law of electrolysis. उसके बाद क्या आ गया? Cell and batteries. Cell and batteries में you have primary cell, secondary cell. ठीक है? Primary cell के example, secondary cell के example. Then you have fuel cell. कुछ हम लिख नहीं रहे. Yes,
What is the meaning of qualitative analysis? Qualitative analysis, products of electrolysis. Oh, okay. Products of electrolysis, right? क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके पास? इट्स अ बिग चैप्टर, इसको ना सेक्शन वाइज ही पढ़ना ज्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक है? एंड ऑल्सो बिकॉज एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से इंटरफेयर नहीं करता। अगर आपने नस्ट इक्वेशन पढ़ लिया अच्छी बात है, लेकिन नस्ट इक्वेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इवन इन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस था। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन कंडक्टेंस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उसमें एक चीज अच्छी चीज भी ये है कि मान ली आप एक एक सेक्शन अलग अलग से पढ़ सकते हैं, ठीक है? सो गिव इट अ बिट ऑफ टाइम, नोट्स को दोबारा से रिवाइज करके अच्छे से पढ़िए, ठीक है? बड़ा चैप्टर है, 1 महीना हो गया लगभग पढ़ते पढ़ते, ठीक है? एंड रिवाइज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट, जो इनिशियल पार्ट था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का, redox reaction, oxidation, reduction, and all of those things. Okay, so you are going to have a test now of again 5 questions on what? On batteries and corrosion. Okay, on batteries and corrosion. अभी रिवाइज कर लीजिए, then we'll start the test. नहीं, you will have 10 मार्क्स का, नहीं 10 सवाल हो जाएंगे, corrosion के कुछ सवाल होंगे and then कमर्शियल सेल्स के कुछ सवाल होंगे। So, जी अरम बताएं। so can I leave? Can who leave? Can I? You are going to leave? No, I'm asking, can I leave? Because I have to go somewhere. You have to go somewhere. Okay. ठीक है। Thank you. leave.